A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, today is your fourth lecture and we are going to continue our discussion for chapter number 1, measurement. Today's lecture outline is uncertainty, indicating uncertainty and examples related to uncertainty. Uncertainty, according to its definition, in any measured value, there is a degree of inaccuracy. This may be due to the limitations in the equipment's measurement or due to experimental procedure. हर मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी मौजूद होती है. इसकी वजह बहुत से लिमिटेशंस हो सकती हैं इक्विपमेंट्स के अंदर. मेजरमेंट्स को सही तरह से मेजर नहीं किया गया वैल्यूज को, या एक्सपेरिमेंटल एरर्स या प्रोसीजर जो सही तरह से परफॉर्म नहीं किए गए जिसकी वजह से एरर्स जनरेट हो गए. इन एरर्स को हम इन एक्यूरेसी के अंदर लाई करते हैं या इन एक्यूरेसी के अंदर हम इनको कंसीडर करते हैं और यही इन एक्यूरेसीज बेसिकली अनसर्टेन वैल्यूज को जनरेट कर रही होती हैं. There is an example of uncertainty in measuring a rod with a scale. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक रॉड को एक स्केल या रूलर के ऊपर हम लेंथ नोट करने के लिए रख रहे हैं, और जब हम इसकी लेंथ नोट करते हैं तो इसका इनिशियल पॉइंट 0 पे मौजूद है, जबकि इसका फाइनल पॉइंट हमारे पास स्मॉल लाइंस के दरमियान मौजूद है. अब आपके पास यहाँ जो लाइंस गिवन है ये एग्जैक्ट वैल्यू को शो कर रही हैं, लेकिन इनके दरमियान की जो वैल्यू है वो आप एग्जैक्टली क्या है नहीं बता सकते. ये चीज या ये जो आपके पास कंसिडरेशन है कि यहाँ पर क्या वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के बाद आएगी, ये बेसिकली आपके पास एक स्मॉल एरर या एक स्मॉल अनसर्टेन वैल्यू को जनरेट कर रहा होता है. In this example, it is difficult to exactly measure the length of the rod. The most accurate measurement that we can make is to say that it is just over 2.75 centimeter. It is difficult to be more accurate than this due to the space between the graduations. For an analogy, the scale reading uncertainty is plus minus half the scale division. In this example, the cylinder or rod measures 2.7 plus minus 0.05 सेंटीमीटर. यानी कि हमारे पास अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास 2.7 एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन जो आगे 5 मौजूद है ये 5 बेसिकली एक अनसर्टेन वैल्यू है जो कि 0.05 ऐड भी होके आ सकती है या 0.05 माइनस करके भी जनरेट की जा सकती है. तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये आपके पास उस एग्जैक्ट वैल्यू का अनसर्टेन पार्ट या हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल एरर है जो कि लिमिटेशन ऑफ द इक्विपमेंट की वजह से यहाँ पर आपके सामने आ रहा है. अब आपके पास डिफरेंट मेजरमेंट्स के अंदर डिफरेंट अनसर्टेनिटीज को इंडिकेट करने के क्या रूल्स हो सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. Assessment of total uncertainty in the final results. When we compute result from given data, the uncertainty in the final result can be determined by the following rules. कुछ rules हैं जिनकी मदद से हम final result के अंदर uncertainty को determine कर सकते हैं. First rule है for addition and subtraction. Absolute uncertainties are added. This one the rule for the addition and subtraction. For example, the distance x determined by the difference between two separate position measurements. If x1 is 10.5 plus minus 0.1 centimeter and x2
26.8 plus minus 0.1 centimeter is recorded as, then x is equals to x2 minus x1, which is equals to 16.3 plus minus 0.2 सेंटीमीटर। यानी हमने यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर एंड 0.1 सेंटीमीटर जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज थी प्लस माइनस करके इन दोनों को ऐड किया, जो कि मिलके आपके पास 0.2 हो गई। तो जो एग्जैक्ट वैल्यूज थी 10.5 एंड 26.8 इन दोनों को माइनस किया गया। माइनस करने के बाद जो आंसर आपके पास आया वो है 16.3, लेकिन इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद उसको फाइनल रिजल्ट के साथ लिखा, जो फाइनल रिजल्ट आपके पास 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर आ गया। Now the second rule is for multiplication and division. Rule percentage uncertainties are added. जो भी percentage uncertainty होगी उनको ऐड कर दिया जाएगा। For example, the minimum possible uncertainty in the value of resistance R of a conductor determined from the measurements of potential difference V and resulting current flow I by using R is equals to V over I can be found as V equals to 5.2 plus minus 0.1 volt, I is equals to 0.84 plus minus 0.05 ampere. The percentage uncertainty in V is determined by 0.1 volt divided by 5.2 multiplied by 100, which is approximately 2%. Similarly, the percentage uncertainty in current can be determined by 0.05 ampere divided by 0.84 ampere multiplied by 100, which is approximately equals to 6%. यानी कि जो भी आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी जो भी आपके पास 0.1 या 0.05 अनसर्टेन वैल्यूज हैं, इनको रियल या एग्जैक्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाए तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ दैट मेजरमेंट आ जाती है। नाउ hence total uncertainty in the value of resistance R when V is divided by I is 8%. The result is thus quoted as R is equals to 5.2 volt divided by 0.84 volt, which is equals to 6.19 volt per ampere, which is equals to 6.19 ohms, with a percentage uncertainty of 8%. That is R is equals to 6.2 plus minus 0.5 ohms. The next rule is for power factor. Multiply the percentage uncertainty by that power. For example, in calculation of volume of a sphere using formula V is equals to 4 over 3 pi r cube, percentage uncertainty in volume equals to 3 multiplied by percentage of uncertainty of radius. यानी कि जिस वैल्यू के ऊपर पावर मौजूद होगी उस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे से, यानी कि इस फॉर्मूले में r के ऊपर क्यूब पावर मौजूद है तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा r की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। फॉर एग्जांपल, as uncertainty is multiplied by power factor, it increases the precision demand of measurement. If the radius of the small sphere is measured as 2.25 cm by a vernier caliper with least count of 0.01 cm, then the radius r is recorded as 2.25 plus minus 0.01 cm. Absolute uncertainty is 0.01 cm, यानी कि लीस्ट काउंट यहाँ पे 0.01 cm गिवन है। Percentage uncertainty in R is 0.01 cm divided by 2.25 cm multiplied by 100, which is equals to 0.4 cm. Now, total percentage uncertainty in volume of sphere is 3 into 10 raised to the power 0.4 equals to 1.2%.
Thus volume 4 over 3 pi r cube equals to 4 over 3 multiplied by 3.142 multiplied by 2.23 सेंटीमीटर क्यूब, यानी रेडियस की एक्चुअल वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया, बाकी तमाम वैल्यूज कांस्टेंट है. So we get 47.689 centimeter cube with uncertainty of 1.2%. Thus the result should be recorded as volume 47.7 plus minus 0.6 centimeter cube. In case of power factor, power will be multiplied with the percentage uncertainty. Is uncertainty in average value of many measurements. Rule: to find uncertainty in mean value, we follow these steps. Find the average of measured values. Find the deviation of each measured value from the average. The mean deviation is the uncertainty in the average value. This mean deviation is equal to the uncertainty in mean value. For example, find the average of measured values. Suppose taken measurements are x1 is equals to 1.50 centimeter, x2 is equals to 1.51 centimeter, x3 is equals to 1.52 centimeter. Now average value of x1 plus x2 plus x3 divided by 3, which is 1.51 centimeter. Now find the deviation of each measurement value from the average value. Delta x1, average value minus x1, 1.51 minus 1.50, which is equals to 0.01 centimeter. Delta x2 is equals to average value minus x2, which is equals to 0. Delta x3, average value minus x3, which is equals to 0.01 centimeter. Now mean deviation निकाल लेते हैं तमाम वैल्यूज को ऐड करके. डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 divided by 3, which is equals to 0.007 centimeter. Mean deviation equals to 0.007 centimeter. Uncertainty in timing experiment. This one is fifth rule. The time period of any vibrating body can be found by time period is equals to t is equals to total time of all vibration divided by total number of vibrations. Absolute uncertainty in time period delta t equals to least count of a stopwatch divided by total number of vibrations. For example, calculate the time period and uncertainty of a pendulum if it completes its 30 vibration in 54.6 seconds, which is calculated by a stopwatch of least count 0.1 second. Time period for one vibration is 54.6 divided by 30, which is 1.82 seconds. Absolute uncertainty delta t is equals to 0.1 divided by 30, which is equals to 0.003 seconds. Now the total answer is t is equals to 1.82 plus minus 0.003 seconds. Thank you students. This is your lecture for today. If you have any problem or any query, then you can ask me from Google Classroom through my WhatsApp number or email. Thank you again.